हेलो एवरीवन, दिस इज प्रवीण एंड हाँ, बहुत दिनों बाद मिले हैं। लेकिन बहुत ही यार कुछ प्रॉब्लम्स थी। इट्स ओके फॉर दैट, बट टुमारो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं the saving or maybe 1 month challenge to learn Python and DSA on that. Okay, why DSA? Because of my bro, to to create efficient code. Oh, see this. What happened with me? That's why I'm not able to use computer more effectively. And you see this all the current up and down, whatever it is. Okay, so Python with DSA and Python. We are going to learn and we are going to build some apps, or not apps, I'm sorry, some software, some small, which is really solve problems, not like to make any copy or project from YouTube or anywhere to copy just and paste. It's not about that. I'm just going to learn deeply with whatever problem context I choose and making all the videos. But by the way, I just wanted to share to you that I got a problem and I solved this. So my bro, you are a coder, you need to solve everything. I don't know. So let's see this out. तो ये देखो, दिस इज माय पीसी जो कि मैंने अभी ओपन करा हुआ है। वाई वाई क्यों ओपन किया भाई? इसको ओपन करने की जरूरत क्या थी? बिकॉज भाई ये देखो, अब मॉनिटर को देखो तुम, यहाँ पर मॉनिटर पे एक यहाँ पर पूरा अच्छे से देखो। देखो ना, ये लाइन आ गया है। ये क्या हो रहा है मेरे मॉनिटर स्क्रीन के साथ? ये मुझे लग रहा था ये रैम की वजह से हुआ है, आई थिंक। क्योंकि रैम को मैंने अभी क्या हो रहा था, नो सिग्नल आ रहा था, ठीक है। वो क्या रहा था, नो सिग्नल आ रहा था मेरे स्क्रीन पे। एंड मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत वही चैट जीपीटी का है जमाना, तो उसके पास नॉलेज है, नॉलेज का भंडार भरा गया है उसके अंदर, तो भाई उस भंडारे का हम लोग भी फायदा उठा लिया जाए। यही प्रॉब्लम है, बस वी आर गोइंग टू यूज दैट। एंड हाँ, मैं गया एंड उस पे सर्च किया भाई, why this problem happened with me। एंड मैंने फिर दो तीन तरीके को यूज किया। लाइक कि पहले मैं मेरा क्या हो रहा था, एक प्रॉब्लम मैंने डायग्नोसिस किया। पहला प्रॉब्लम था, पीसी को ऑफ कर रहा था, ऑफ नहीं हो रहा था। फिर उसने कहा 5 to 10 सेकेंड तक प्रेस करो, लॉन्ग प्रेस। तो मैंने प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस। एंड फिर क्या हुआ, पीसी ऑफ हुआ। ठीक है, पहला काम डन हो गया। फिर उसके बाद मैंने पूछा भाई और क्या करना है आगे। फिर उसने बताया रैम स्टिक को निकालो, जो भी रैम तुम्हारे कंप्यूटर में लगा निकालो, एंड उसके जो भी गोल्डन पार्ट्स हैं उसको इरेजर से रब करो, एंड फिर अगेन उसे लगाओ। और मैं निकाल तो लिया था लेकिन लगा नहीं पा रहा था। तो फिर उसे भी देखा, दोनों हाथ से तेजी से प्रेस करना है। मैं सोचा मैं टूट ना जाए भाई रैम स्टिक, तो रैम टूट ना हो जाए इसलिए तेजी से हो गया काम यार, अब चलने लगा है। तो वी कैन बिल्ड थिंग्स। एंड हाँ, मॉर्निंग से मिलते हैं बॉस। मॉर्निंग टाइम में हम लोग इस चीजों को पढ़ेंगे, एंड इन समय समथिंग वी क्रिएट, समथिंग वी लर्न, एंड मैं कुछ वीडियोस एंड चीजें शेयर करता रहूंगा। बस ओके एंड यस, हम लोग करेंगे। अब मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं हूँ भाई उसी जुनून के साथ, उसी हार्डवर्क के साथ। That's it. The Praveen Effect helps you, and also I want to use this comment me below, my dear bro, and I want to connect to you, and we all learn together because, my dear bro, it's a long process and it's a long wide thing which we need to learn. So, my dear bro, nobody actually solves their own problem in just like it taking time, you know that. So what I'm saying to you, that comment me below whatever you're doing now, whatever you're loving, just comment me below. I just want your comment so that I can really uh, whatever your problem I can solve, and we are going to build things together. You know that the software making process takes time and needs team. It's not easy to make anything. Okay, it's okay. You're saying that I'm going to copy from ChatGPT. This is my second friend. Second friend. That is my second agent, which is
code for me. But my dear bro, it's not coding for 50 hours with you on same memory, same knowledge. It's changing again and again because उसके पास बहुत बड़ा डाटा सेट है, उसमें से कहीं से भी कुछ भी उठा के लाके तुम्हें दिखाता है. हाँ, वो लिमिटेड स्टोरेज है उसके पास, तो दैट्स वाई तुम्हारा कुछ डाटा सेव कर लेता है. उसी की मदद से वो जो सेव किया हुआ तुम्हारा डाटा है, उसके रिकॉर्डिंग तुम्हारा मतलब पास का डाटा जो भी सेव किया है उसने मेमोरी में, उसके अकॉर्डिंग और जो तुमने रिस्पॉन्स जो भी तुमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वो देता रहता है डाटा. और एक समय बाद मेमोरी फुल हो जाती है, तो यू नो दैट कि अब वो और ज्यादा बातें हम लोग स्टोर नहीं कर सकता, तो कहाँ कहाँ से डाटा क्या क्या ला के देगा, मेमोरी हैंग हो जाएगी, क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम. बट human minds is not like that, so that is why I'm saying to you, just comment below so we can build together. And oh even that's it. Okay, let's go and we can do that. And after that I wanted to show you uh thing which I built it with with vibe coding, and I really learned a lot from there, from making that. And okay, right now I'm just going to use do assemble that all. And ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा इसे खड़ा करते हैं, and then we build things. And चलो मिलता हूँ कल मॉर्निंग में इन लाइव, अगर मेरा कंप्यूटर अच्छे से साथ दिया तो. Otherwise I make a video and maybe saying to you that my problem and why I'm not going to live, and चीजें सीखूंगा that I really बताऊंगा सारी चीजें. Okay, let's go and we can build together. I'm saying always to you, so just join me, the Praveen Effect, and win the coding game. That's okay. Okay, bye.